से भी बड़ी सावधानी पूर्वक यान Mission के साथ Director Roger. समायोजित कर दिया जाएगा। ये अभी इसको एनकैप्सुलेट किया जा रहा है। पेलोड फेयरिंग के अंदर इसे सुरक्षित कर लॉन्च पैड लाया गया है। इस एनकैप्सुलेटेड असेंबली को स्टेज 3 के ऊपर में समायोजित कर दिया गया और इस Mission तरह Director तैयार हो Roger. चुका है SSLV D3 T लॉन्च minus 18 व्हीकल। minutes. इसके पश्चात मोबाइल सर्विस टावर को सुरक्षित दूरी पर वापस ले लिया जाता है। This is Mission All Director. preparations for Mission SSLV Readiness Review D and Launch Authorization Board have already given clearance for proceeding with the countdown and launch of SSLV D3 EOS-08 mission. All operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from the launch vehicle, spacecraft, range and distract network station and prevailing favorable weather condition, Mission Director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of SSLV D3 EOS-08 mission at 9:17 hours IST today, that is 16th August 2024. All stations to note, Mission Director has given authorization for the launch of SSLV D3 EOS-08 mission. इस उड़ान की उल्टी गिनती लगभग 6.5 घंटे पहले शुरू हो चुकी है। इस दौरान काफी सारी गतिविधियां, परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं। ALSC Roger. सभी तंत्रों और उपतंत्रों के संतोषजनक पाए जाने पर रेंज डायरेक्टर, टेलीमेट्री एंड टेलीकमांड डायरेक्टर, स्पेसक्राफ्ट डायरेक्टर और व्हीकल डायरेक्टर यान के प्रमोशन की अनुमति देते हैं। Automatic launch sequence initiated for SSLV D3 EOS-08 mission. यह सभी तंत्र संतोषजनक पाए जाने पर मिशन डायरेक्टर ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का अनुमोदन प्रदान करते हैं और तत्पश्चात व्हीकल डायरेक्टर ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करते हैं और ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू किया जा चुका है। SDS servers activated. MC confirms data from Sharvan and countdown T-minus leading 16 for the minutes. launch of SSLV has been 6 hours 30 minutes long. The launch vehicle, spacecraft, range systems and downrange tracking stations gear up with concerted activities leading to the launch. Here on your screens, you are watching the visuals from the launch view gallery here at Sriharikota. Many curious faces eagerly waiting for the launch. जी हाँ, बड़ी तादाद में सुबह से छात्र छात्रागण यहाँ उपस्थित प्रमोशन का आंखों देखा आनंद लेने के लिए। Based on confirmation of readiness from all participating teams, the start of automatic launch sequence has been authorized. It's a capsule of very essential T-minus checks before 15 launch. When the computers at Launch Control Center ascertain the good health of the launch vehicle, the onboard computer is handed over the action. Right now, we are 14 minutes 40 seconds away from the scheduled Rear launch sensor time. and chain actuation in progress. SSLV D3 EOS-08 मिशन में इसरो के नवीनतम भूप्रेक्षण उपग्रह जो कि 175 किलोग्राम का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसे लघु प्रमोचन यान यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV द्वारा 475 किलोमीटर की गोलाकार निम्न भू कक्षा में 37.4 डिग्री के झुकाव के साथ प्रक्षेपित किया जाएगा। इस मिशन में T-minus स्पेस 14 रिक्शा minutes. द्वारा निर्मित SR-0 डेमोसैट भी एक सहयात्री उपग्रह है। SSLV D3 का प्रमोशन भारतीय मानक समयानुसार आज 16 अगस्त 2024 को प्रातः 9:17 पर श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से किया जा रहा है। इस प्रमोशन का कुल काल 945 सेकंड में पूरा किया जाएगा।
This mission of SSLV D3 intends to place EOS-08, weighing 175.5 kilograms, the primary satellite, in 475 kilometer circular low Earth orbit with an inclination of 37.4 degrees. The mission also carries a passenger payload SRO's Demosat from Space Rickshaw. The launch will take place from the first launch pad of SDSC Shara, as we already told you. Present launch is the third and final developmental flight of the small satellite launch vehicle SSLV that is designed for low-cost access to space for micro, mini and nano satellites. Feasibility to be assembled in this time and launched on demand, thereby necessitating only minimal launch infrastructure. The first developmental flight of SSLV D1 EOS-02 AzadiSat mission in August 2022 had performed as predicted with respect to propulsion stages. However, due to an anomaly, the satellites were placed in an unstable elliptical orbit. The second developmental flight of SSLV D2 EOS-07 held in February 2023 was a textbook success. The completion of today's mission will herald the SSLV rocket into the operational phase for further launches. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। अब हम उड़ान से 12 मिनट 1 सेकंड की दूरी पर T-12 minutes. SS2 Rodan chain actuation completed. SSLV की प्रथम उड़ान हमने 7 अगस्त 2022 को देखी थी। फिर 10 फरवरी 2023 को SSLV D2 EOS-7 का सफल प्रक्षेपण हमने देखा और आज हम यहाँ SSLV के तृतीय प्रमोचन देखने जा रहे हैं। इस उड़ान के पश्चात SSLV की विकासशील उड़ानें खत्म होकर NSIL द्वारा प्रचालनशील उड़ानें प्रारंभ की जाएंगी। SS1 Rodan chain actuation in progress. SSLV की मुख्य विशेषता यह है कि इसे कम लागत में तैयार किया जा सकता है और इसे पुनः तैयार करने में भी बहुत कम समय लगता है और यह मांग के अनुसार कई उपग्रहों को समायोजित करने तथा प्रक्षेपण करने का क्षमता रखता है। We are about 11 minutes from the launch, and as we wait, let me describe the nominal flight events that the SSLV D3 EOS-08 mission will go through. Ignition of the first stage motor, SS1, marks the T0 for liftoff, which is scheduled at 9:17 hours. The thrust of SS1 will carry the rocket to an altitude of 93 kilometers within 124 seconds, that is close to 2 minutes. The second stage, SS2, ignites 300 milliseconds ahead of the separation of first stage. The launch vehicle is configured with vented interstage to abet the hot separation. 131 seconds into the flight time, closed loop guidance is initiated. Hereafter, based on the final destination, the rocket steers itself with correction in trajectory. At 158.7 seconds into the flight time, when the rocket would have reached 147 kilometer altitude, the payload fairing will be separated. In the absence of dense atmosphere at that altitude, the aerodynamic shaping of rocket imparted by payload fairing is no longer essential. The second stage burns out at 239 seconds into flight. Its action time is 115 seconds. The launch vehicle coasts for the next 163 seconds. During this regime, there is no thrust development, but the launch vehicle is steered. At the expense of meager loss of relative velocity, the launch vehicle gains an altitude of 182.5 kilometers. The ignition of third stage, SS3, is scheduled 10 seconds after the SS2 separation. It burns for 109 seconds, during which there is remarkable increase in relative velocity of the launch vehicle. It increases from 3.2 kilometers per second to 7.2 kilometers per second. And in the coast phase of 176.6 seconds follows the action of SS3, while the stage is with the ongoing launch vehicle. SS3 is separated 697.6 seconds into flight. Another 8.5 seconds later, the velocity trimming module plays a crucial role of adding or curtailing velocities
as necessary to impart appropriate injection parameters to the primary satellite EOS-08. This is scheduled to take place approximately 13 minutes 29 seconds into flight. Injection of SRO DemoSat at 476.23 km altitude marks the completion of the mission. In all, the mission is 15 minutes 44 seconds long. इस यान में प्रथम चरण में HTPV पर आधारित ठोस नोदक वाला चरण है, जिसमें कुल 87 टन का ठोस नोदक है, जिसकी मदद से वह 2496 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को 94 सेकेंड में 93 किलोमीटर की ऊंचाई प्रदान करेगा। SS2 prime chain actuation completed. द्वितीय चरण में ठोस नोदक है फिर से, और इस चरण में कुल 7.7 टन का ठोस नोदक है। इसके साथ वह 234 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। यह चरण 116 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर यान से पृथक कर दिया जाएगा। अब आप सभी दर्शकों के सामने है एक कर्टेन रेजर वीडियो SSLV D3 का। One prime chain actuation in progress. Over the years, there has been a significant global shift in demand for small satellite launches. There is a growing need for a constellation of Earth observation and communication satellites at a lower cost. Small satellites have the potential to transform society by bringing the benefits of space technology to even the remotest of places. The numerous advantages of small satellites will make them a game changer in the space industry. To cater to this need, ISRO has developed a quick turnaround launch vehicle called the Small Satellite Launch Vehicle SSLV to launch single or multiple nano, micro and mini satellites up to 500 kilograms to the planar low Earth orbit. SSLV is a three-stage vehicle with all solid propulsion stages and liquid propulsion based velocity trimming module as terminal stage. It is 2 meters in diameter and a height of 34 meters with lift-off mass of 120 tons. The third mission of SSLV D3 is set to launch with EOS-08 as the primary satellite, developed by ISRO, and SR-0 DemoSat as a co-passenger satellite developed by Space Kids India. The satellites will be positioned in a 475 km circular orbit. The primary satellite EOS-08 is a microsatellite built on an IMS-1 bus platform, and the mass of the satellite is around 175 kilograms. The primary objectives of the EOS-8 satellite are to create payload instruments compatible with the microsatellite bus and to incorporate new satellite-related mainframe technologies required for future micro-operational satellites. The satellite is equipped with 3 payloads: the Earth Observation Infrared Payload (EOIR), and the Global Navigation Satellite System Reflectometry Payload (GNSSR), and Silicon Carbide Ultraviolet Dosimeter. The data from the satellite will be used for disaster monitoring, fire detection, volcanic activity observation, industrial and power plant disaster monitoring, cryosphere studies over the Himalayan region, and flood detection. The Silicon Carbide Ultraviolet Dosimeter is designed to monitor the UV irradiance at the viewport of the crew module in the Gaganyaan mission. The mission life of the satellite is expected to be 1 year. SSLV is poised to revolutionize the global space commercial market, catering to the launch of small, mini, micro and nano satellites. And it allows the launch of multiple satellites into multiple orbits with minimal infrastructure requirements.
This accomplishment will undoubtedly bolster the Indian space ecosystem on the global stage. जी हाँ, अभी आपने देखा संक्षिप्त विवरण SSLV D3 EOS 8 मिशन का। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य एक बार फिर दोहरा देते हैं। SSLV प्रमोचन यान की विश्वसनीयता एक बार और सिद्ध की जाएगी इस प्रमोचन द्वारा। माइक्रो सैटेलाइट बस के साथ संगत निर्भर उपकरणों का विकास तथा उनका तकनीकी प्रदर्शन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भावी प्रचालनशील उपग्रहों के लिए आवश्यक नई तकनीकों का प्रदर्शन करना, जिसमें एकीकृत एवियोनिक पैकेज, एम्बेडेड PCB व बैटरी के साथ संरचनात्मक पैनल, लचीले सौर पैनल और ड्यूअल जिम्बल एंटीना जैसी नई प्रौद्योगिकियों को माइक्रोसैट में समायोजित करना भी शामिल है। अब हम उड़ान से 2 मिनट 40 सेकंड की दूरी पर। The year 2024 began as the New Year's Day dawned with the successful launch of PSLV C-58 ExpoSat mission. Aditya L1 spacecraft, the maiden mission of ISRO to observe Sun, has been successfully placed in the designated three-dimensional halo orbit of the Sun-Earth Lagrange's point L1 on 6th of January. On 17th February, INSAT 3DS was injected by successful launch of GSLV F-14. With the third consecutive success of reusable launch vehicle landing experiment on 23rd June, landing experiment series are complete. On 22nd of July, ISRO conducted flight experiment for demonstration of air-breathing propulsion technology through the launch of RH-560 sounding rocket from SDSC Shar. Today, we are gearing for the SSLV D3 EOS 08 mission from SDSC Shar. We are about 1 minute 30 seconds from the launch. अब हम लगभग 1 मिनट 20 सेकंड की दूरी पर हैं उड़ान से। सर्वप्रथम प्रथम चरण का प्रज्वलन शुरू होगा T0 पर। यह मिशन दक्षिणी पूर्वी दिशा का मिशन है। इस मिशन के पूर्ण परिपथ की ट्रैकिंग के लिए रडार स्टेशन में शार, त्रिवेंद्रम, पोर्ट ब्लेयर, सिंगापुर और यत्रगा स्थित रडार स्टेशन इस पर निरंतर नजर बनाए रखेंगे और हम तक वास्तविक समय पर यान की सभी गतिविधियों